یہ سفر ہر منزل پر خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے دنیا کا تعارف ایک نئے مذہب اسلام سے ہوا۔ یہی زمانہ تھا جب ہند میں اس کا قدم کیرل میں پڑا۔ عرب سے رشتے بہت پرانے تھے، تجارت ان کی بنیاد بنی، پھر علم کی تلاش میں سمندروں کو پار کر کے لوگ کیرل سے عرب اور عرب سے کیرل آتے رہے۔ کیا ہے اسلام جس نے ہندوستان کی سرزمین پر رنگا رنگ پھول کھلائے ہیں؟ کہنے کو تو یہ صرف عمارتیں ہیں، سینکڑوں سال پرانی عمارتیں، لیکن یہ گواہ ہیں ایک تہذیب کی، ایک اتہاس کی، جو کسی نہ کسی طور سے آج بھی ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ Gone through this experience of a refugee, that we are rehabilitated in this area, which makes it very fortunate and lucky as one who is deprived of everything. But this wonderful space and the monument and the kind of history associated with this monument in itself is something very, very to be proud of. چمن زاروں کی خوبصورتی شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک قدم اور آگے بڑھی۔ انہوں نے سنگیت اور کلا، علم اور ادب کے میدان میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے بنیادی نظریوں میں بھی ہندوستانی اثر کو قبول کیا۔ ان شاندار مقبروں کے چاروں طرف جو باغ بنائے گئے تھے وہ دراصل فارسی طرز کے باغ ہیں۔ باغوں کی پوری ڈیزائن جیومیٹریکل ہے، جسے بہت کلاتمک ڈھنگ سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بنانے والے اسپیس اور فوم کے جیومیٹریکل رشتے کو سمجھتے تھے، جو اسلامی آرٹ کی بنیاد ہے۔ پانی کی نہروں کا استعمال اس طرح کیا جاتا تھا کہ اس سے نہ صرف باغوں کی خوبصورتی بڑھتی تھی بلکہ وہ سینچائی کے کام بھی آتا تھا۔ تاج رگو رائے، 300 سال پہلے بنی یہ عمارت آج بھی ہمیں کیوں حیرت میں ڈال دیتی ہے؟ When I reached Agra, and we were still maybe 5-6 kilometers away from Taj, and yet, you could see in the cityscape, the Taj, the dome, the minarets, so overpowering and standing above the city, looking at you. So I said, my God, magnificent, So I started taking pictures from there. So it was such a powerful experience that my first trip to Agra was basically photographing Taj from all around in its environment where it stands today. So I thought, my God, it's an endless affair, I'll have to come back again. خطاطی ایک فن ہے جو انسان دل و جان سے چاہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس میں خدا کا لفظ گویا نکلا، قرآن شریف لکھا گیا، پھر بعد میں یہ آرٹ کی دنیا میں آیا، اور وہاں پہ آپ کو عالم مثال، عالم خیال جو خدا نے انسان کو دیے ہیں، اس وجہ سے آپ کو منیچر پینٹنگ میں چرندے پرندے چڑیاں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ عالم خیال اور عالم مثال نے آپ کو دیے ہیں، اور خطاطی سے بھی آپ یہی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، تو مراد میاں، ہم اس وقت پرانی دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پرانی حویلی میں، اور اگر جب یہاں سے گلی میں باہر جائیں گے تو جامع مسجد پیچھے ہے، اور یہ نہایت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ کہلاتی ہے۔ یہاں قدم قدم پہ آپ کو مزار ملیں گے، مثلا حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار نظام الدین اولیاء میں ہے، خواجہ بختیار کاکی کا مزار۔ دہلی جو ہے تصوف کا ایک گڑھ ہے، سمجھیے۔ یہاں پہ صوفی منوش جو رہتے تھے وہ اس قدر محبت اور پریم اور عشق کی باتیں کرتے تھے
कि सब इंसान खुदा की नज़र में बराबर हैं। सूफियों के बहुत से सिलसिले हैं, सूफी ऑर्डर्स हैं, नक्शबंदिया है, कादरिया है, सोहरवर्दिया है, रिफाइया है। उसी में से एक बड़ा मशहूर सिलसिला चिश्तिया सिलसिला है, जिसके सबसे मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं। वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके जानशीन हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके जानशीन हुए बाबा फरीद गंजशकर। बाबा फरीद गंजशकर वो बुज़ुर्ग हैं जिनको सभी ने माना, यहाँ तक कि सिख गुरु साहिबान जो उनके कई सौ बरस बाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी बाबा फरीद की तालीमात और बानियों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह दी। उसके साथ साथ जो पैगम्बर इस्लाम का जो असली पैगाम था, मिसाल के तौर पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उनके जानशीन हुए। उनको जब उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाया और दिल्ली भेजा अपना नुमाइंदा बनाकर, तो उनको जो दुआएं दी थी वो सुनने के काबिल हैं। एक दुआ तो उन्होंने ये दी कि अल्लाह तुझे वक्त खुश, राहत दिल और आबी दीदा अता फरमाए। यानी उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुझे दिल की खुशी अता फरमाए, राहत अता फरमाए और आँख के आंसू अता फरमाए। अब भले बताइए, आमतौर पर यह दुआ नहीं जाती, लेकिन आँख का आंसू जो है वो दरअसल दर्दबंदी इंसान की, जो दूसरे इंसानों के तई एक हमदर्दी और दर्दबंदी होती है, उसको जाहिर करता है। और असली राहत दरअसल उसी में है। और इसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है एक और इस्लाम के बड़े तारीख़ी वाक़े से भी, करबला का वाक़या। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पैगम्बर इस्लाम के नवासे थे, उनको जुल्म के साथ शहीद कर दिया गया था। उनको सब मुसलमान याद करते हैं और उसका गम मनाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की महफिल समा से एक नई मूसीक़ी का सिलसिला शुरू होता है। उन्होंने हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत को अल्लाह से इश्क के ज़रिए से अवाम तक पहुंचा दिया। सुर लय के मैदान में चिश्तिया सिलसिले ने जो कदम रखा था, उसे अमीर खुसरो ने परवान चढ़ाया और उसके बाद वो आगे बढ़ता ही चला गया। अमीर खुसरो की रूहानी शायरी कश्मीरी सूफी गायकी की रूह बन गई। यहाँ का साहित्य, संगीत और ललित कलाएं इसकी गवाह हैं कि यहाँ समय समय अलग अलग तहजीबें एक दूसरे से बहुत कुछ लेती देती रही हैं। शाह अली हमदानी ने कश्मीर की दस्तकला में जो योगदान दिया था, वो आज कश्मीर की पहचान बन चुका है। यहाँ सूफी मत और भक्ति दर्शन का जो मेल हुआ था, उसने शेखुल आलम नूरुद्दीन वली जैसे ऋषि कवियों को जन्म दिया, इल्म के खजाने खोल दी। Well, it goes back almost even before the birth of Guru Nanak, because the midwife, her name was Daultan, who brought him into the world, was Muslim. So you can see how long the relationship is from the time of the birth of the founder of the faith. And then again, interestingly, his lifelong companion for 47 years, his childhood companion who stayed with him 47 years until his death, was Mardana. And after Mardana died, his son Shahzad then took over, and he stayed with Guru Nanak until Guru Nanak died. You see, then again, to get to know more about Islam from Islamic scholars and savants, he traveled with Mardana to Kabul, and then to Mecca, and then to Baghdad. Now, in those days, travel was not easy. But he went there and came back more enriched, more sort of fulfilled, and with a greater insight
of this faith that he admired. And you know, so it's a very, very long relationship which has been sustained by successive gurus after that. The fifth Guru, Arjan Dev, invited his friend, the Sufi mystic, to lay the foundation stone of the Golden Temple, which he did. Again unheard of. तब सवाल ये पैदा होता है कि इतने मेल जोल और प्यार मोहब्बत के बावजूद लोग क्यों बट गए। Do you know that 1 million of them died in the most horrible conditions? That children became orphans, that women were raped, that old and aged had to perish on the way trying to cross from one border to the other, and that in the process no less than 15 million people were uprooted. That is the price of partition that both Hindus and Muslims pay. In the wake of the Khilafat movement, such forces of unity between Hindus and Muslims were forged by Mahatma Gandhi and the Ali brothers, Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, that the governor of Bombay, Lord Lyte, wrote to the Secretary of State that it is just a question of days when we will have to pack up and leave India. But unfortunately, subsequent events gave such a setback that it almost broke Gandhiji's heart. That is how every time Gandhiji tried to bring Hindus and Muslims together, the British saw to it that either by propping the feudal Muslim leadership, the communal Hindu leadership, or by sort of instigating either communities on some religious issue or the other, that such kind of unity is never brought about and it could never come. And therefore you had this conflict between the Congress and the Muslim League, which ultimately resulted in the partition of the subcontinent. लेकिन अब तो एक युग बीत गया है, ज़माना बदल गया है। जिन लोगों ने पार्टीशन के वक्त यहीं रहने का फैसला किया था, वो आज यहीं अपने अकीदे की रोशनी में मानवता की सेवा कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से दोस्ती की महक आती है। दोस्तों की कमी कहाँ है? टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर, सड़क के किसी भी मोड़ पर, चाय खाने के कोने में, सबके लिए कुछ न कुछ करते हैं ये लोग। दोस्त नहीं तो और क्या है? लोगों की खिदमत के जज्बे का जन्म इबादत से होता है। मस्जिदों में जाकर ऐसा लगता है कि जैसे रूहानियत और खूबसूरती एक दूसरे में जज्ब हो गए हो। ये कदीमी कोंकणी मस्जिद तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये एक तालाब पर बनी है। यहाँ इंसान और इंसान के दरमियान एक ही रिश्ता है, बराबरी का रिश्ता। ना यहाँ कोई मालिक है, ना नौकर, ना राजा है, ना रंग, ना शाह है, ना गधा, ना काला है, ना गोरा, ना ऊंचा है, ना नीचा। सब बराबर हैं उस खुदा के हुजूर में जो रहीम है, करीम है, रज़ाक है। ये ऐसी खूबसूरती है जो दिल की गहराइयों में झांकने का सबक देती है। ये ऐसी खूबसूरती है जो जज्बे की सदाकत के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جو بیکار ہے اسے کارآمد بنانا کیا کوئی چھوٹی بات ہے؟ دنیا کی تمام کباڑ کو استعمال کے لائق بنا دینا کیا انسانی خدمت نہیں ہے؟ یہ لوگ رات دن لگے رہتے ہیں بیکار کو کارآمد بنانے میں۔ بدلتے ہوئے وقت کی کارگزاریاں کون سمجھ سکتا ہے؟ آج جو اس ہاتھ میں ہے کل اس ہاتھ میں ہوگا، پرسوں کسی اور ہاتھ میں۔ گزری ہوئی گھڑیوں کی گنتی کون کرتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کو سینے سے لگائے اور آنکھوں میں آنے والے سمے کا سپنا سنجوئے۔ یہ بیٹھے ہیں اس طرح جیسے کوئی چٹان۔ صوفی اپنے وچاروں، جن مانس سے لگاؤ، مانوتا سے پریم اور بھید بھاو نہ ماننے کے کارن دیش کے کونے کونے میں لوکپریہ ہوتے چلے گئے۔ علم کو، گیان کو، ودیا کو اتنا مہتو دینے والے دھرم کے ماننے والوں نے بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے تجربے کیے ہیں۔ آج مسلم سماج سیوکوں میں اصغر علی انجینئر کا نام ایک وشیش ستھان رکھتا ہے۔ That Muslims of North had entirely different perceptions from Muslims living, for example, say in Western India. Now, let us take the movement for education among Muslims after British rule was established. Now, the perception of northern Muslims was very different. They thought that Britishers have ruined them, so they should not adopt British culture and British system of education. But Sir Syed had realized that Muslims cannot survive without modern education. So he started the movement for modern education. He started working for starting a college, and there was lot of resistance to it. I mean, he was even declared as kafir by some ulama. He was declared as Christian, as a Jew. All sorts of labels were used against him. But there was no such problem at all when Muslims in Bombay started educational institution known as Anjuman-e-Islam. It was founded by Badruddin Tayyibji, who was retired Chief Justice of Bombay High Court. Not only that, he did not meet with any resistance, but Muslims readily cooperated with him and gave generous donations to start educational institution. یہاں اسلامی طریقے سے ایسی تعلیم دی جاتی ہے جو نہ صرف دماغوں کو روشن کرتی ہے بلکہ زندگی سے آنکھیں چار کرنے کا بھی سبق دیتی ہے۔ انجمن اسلام کی بنیاد 1874 میں رکھی گئی تھی اور آج یہ بمبئی کے لاکھوں بچوں کو ایک اچھے مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس انجمن نے پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایسی پیڑھیاں تیار کی ہیں جنہوں نے ملک کی تعمیر میں اہم رول نبھایا ہے۔ آج کل اس انجمن کے صدر ڈاکٹر اسحاق جمخانہ والا ہیں۔ انجمن درجنوں اسکولوں، کالجوں کے علاوہ طرح طرح کے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی چلا رہی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ Take Western India, for example.
These three mercantile communities, Bohras, Khojas and Memons, have made a lot of contribution to expansion of trade. So much so that even in banking they have made a lot of contribution. Some of the reformist Bohras established a Bombay Mercantile Cooperative Bank in 1948, which has become one of the largest cooperative sector bank in India. Wherever the bank has opened its branches, it has very successfully, they have broken this net of the middleman, and they have made them to stand on their foot, and they have changed the economy of that class of section of society which was being exploited by the middleman. भिवंडी के ये लाखों बुनकर अपने हाथ की सफाई और आंखों की रोशनी से लोगों के तन ढकते हैं। और अब हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज की इजाज़त दी है और उसके लिए हम अब सरगर्दा हैं। तमाम उसके लिए जो ज़रूरियात हैं, उसकी इमारत, इक्विपमेंट ये हम पूरा कर चुके हैं। मुल्क और कौम के खामोश खादिम अपने काम में ही सरमस्त हैं। दस्तकार एक दरख्त है जिसके फल सभी खाते हैं। दिल्ली से नज़दीक मेरठ शहर में भी हजारों बुनकर रात दिन साधारण लोगों के लिए अपनी कला और मेहनत से कपड़ा तैयार करते हैं। मिस्टर नादिर अली क्योंकि ब्रिटिश आर्मी में थे इनिशियली और वो बैंड लीडर थे, तो उन्होंने ये किया कि एक जहाज़ जो 1885 में डूब गया, उसके बहुत सारे बाजे उन्होंने ख़रीद लिए। उन बाजों को ख़रीदने के बाद उन्होंने उनको रिपेयर करके बेचना चाहा, वो नहीं बिक सके। तो उन्होंने हिंदुस्तान का पहला बैंड रेस किया और रेस करके उन्होंने लोगों के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की कि क्यों ना इस बाजे को हिंदुस्तानियों की लाइफ में इंट्रोड्यूस किया जाए। और हिंदुस्तानियों की लाइफ में मैरिज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो मैरिज में पहला बैंड रेस किया और जो बहुत एक्सेप्ट हुआ। उन्होंने बगैर किसी मदद के सिर्फ अपनी जुस्तजू, फिक्र और कोशिश के ज़रिए ये साज बनाए हैं जिन्हें आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माना जाता है। Indian Muslims had a major impact on the field of development of science and technology in India, particularly in technology, where a large number of artisans and craftsmen became Islam because Islam gave them social status and equality, and they were highly prized. And this led to the major development. So if we look at the development of India over the period, Islamic contribution or the contribution of Muslims was in fact creating a base for a new civilizational development. And today again, after the trauma, they have recovered and making major contribution in almost every field. महान संस्कृति का विकास विज्ञान की उपलब्धियों के बिना नहीं हो सकता। मध्यकालीन प्रगति और वैभव के पीछे भी साइंस और तकनीक का एक ठोस आधार था, क्योंकि उसके बगैर ऐसी शानदार इमारतें नहीं बन सकती थीं। Two dimensions which went on together, the exoteric, that is the rationalism and all that, and the esoteric, which was the internal one, which was mystical. One of the greatest scholar and one of the most remarkable person was Al-Biruni, who came to India, stayed here for 13 years, wrote on every aspect of Indian science. Antarctica as a program started
by Srimati Indira Gandhi when she was the Prime Minister of India, and I was asked to take the first expedition to Antarctica. इन लोगों ने दुनिया की In the अनछुई year और 1981, अनकही हकीकतों को उजागर I किया have है। devoted a major part of my life in the study of the oceans, which is an entirely new science for our country, known as oceanography. समंदरों की सतह और एंटार्क्टिका के सीने में छुपे राजों को सामने लाए हैं। There was hardly any infrastructure available, so my immediate aim was to develop infrastructure facilities in the form of ships, shore-based institutions, manpower, and that's how it started. And over a period of 40 years or so, we have now a full-fledged infrastructure, and the country has done extremely well. हम इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर में 1970 से काम कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट डॉक्टर सिब्ते हसन जैदी ने कायम किया था। दरअसल अगर हम ये कहें कि इंडिया में इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च का कॉन्सेप्ट डॉक्टर जैदी लाए थे। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो डस्ट, जो टॉक्सिक डस्ट होती है या पार्टिकल्स होते हैं, वो लंग में जाते हैं और उससे बीमारी हो जाती है। तो हमारे हज़ारों वर्कर्स जो हैं, स्पेशली हमारी स्टेट यूपी जो है, इसमें तो डस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम वर्कर्स की बेहतरी के लिए है। हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह के हम टेस्ट निकालें कि ये पता लग जाए कि उनको कब डिजीज़ डेवलप होती है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम दीज डिजीजेस. So if we say small things of Islam, then we will realize that science gets ideas from Islam. इन्हें इंसानी खिदमत के जज्बे ने इल्म के सभी दरवाजे खटखटाने की दावत दी है। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े की छत दुनिया की अकेली सबसे बड़ी छत है जिसे बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इमारतें नहीं हैं, खूबसूरती के शाहकार हैं। इन्हें तो देखते चले जाने को दिल चाहता है। आंखें कभी नहीं थकती और दिल कभी नहीं भरता। इस बेमिसाल खूबसूरती के पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी की पक्की बुनियाद है। तारीख़ के लम्हों ने ये जबर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की है, सदियों ने सज़ा पाई। जिस वक्त के यूरोपियन क्रिश्चियन से और मुसलमानों से सलीबी जंगें हो रही थीं, तो क्रिश्चियंस मुसलमानों की जान के दुश्मन थे। लेकिन उन्होंने होशियारी की बात यह की कि मुसलमानों से दुश्मनी को बरकरार रखा, लेकिन मुसलमानों के पास जो साइंसेस थे, जो उलूम थे, उनको सीने से लगाया और उनको परवान चढ़ाया। हमारे यहाँ सूरत हाल ये हो गई कि जब हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया तो यहाँ पर उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों ने एक भयानक गलती ये की कि अगर वो सिर्फ अंग्रेज़ों से दुश्मनी रखते तो वो बात सही थी, लेकिन उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने अंग्रेज़ों से दुश्मनी के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान से भी दुश्मनी बांधी कि जिसमें साइंसेस और उलूम के ख़जाने धीरे धीरे सिमट कर आ रहे थे। जबकि इस्लाम के रसूल ने यह कहा था कि खुज़ुल इल्मा वलो मिन फ़म मुशरिक, अगर तुमको किसी मुशरिक से भी इल्म मिल रहा है तो उस मुशरिक से तुम दुश्मनी कर सकते हो, मगर उसके इल्म से दुश्मनी नहीं कर सकते। 1912 में मौलवी सैयद करामत हुसैन ने
مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول شروع کیا تھا جو آج ایک ڈگری کالج بن چکا ہے۔ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے نہیں آئی ہیں، بلکہ ان کے ذہنی افق کو وسیع کرنا، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنا، تاکہ آنے والے ہندوستان کی ایک اچھی صحت مند اور کارآمد شہری ثابت ہوں، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور خود اپنے آپ کے لیے ایک بہتر سماج کا ممبر ثابت ہوں۔ میں یہ زیادہ ضروری سمجھتی ہوں۔ ندوۃ العلوم اسلامیہ تعلیم کا ایک ایسا سینٹر ہے جہاں دنیا بھر سے طالب علم آتے ہیں۔ یہاں کے پستکالیہ میں 1300 ڈکشنریوں کے علاوہ ہزاروں ریئر مینوسکرپٹس ہیں۔ اسلامیات کے علاوہ یہاں جدید تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ندوہ کے علاوہ دیوبند بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے۔ ندوۃ العلوم کے سرپرست مولانا علی میاں دنیائے اسلام کے اسکالرز میں بہت عظیم سمجھے جاتے ہیں۔ نواب واجد علی شاہ کے بعد اس گنگا جمنی تہذیب کو اودھ کے تعلق داروں نے نئے رنگ دیے ہیں۔ انہوں نے دوسرے کئی ادارے بھی قائم کیے، جن میں لکھنؤ یونیورسٹی، کولون تعلق دار کالج اور میڈیکل کالج کی خاصی اہمیت ہے۔ پرانی اور نئی سنسکرتی کا سنگم بھی لکھنؤ کی تہذیب کا ایک خاص حصہ ہے۔ دہلی اور اودھ کے بعد رامپور کے نوابی دربار نے گنگا جمنی تہذیب کو بڑھاوا دیا۔ اسی خاندان کے لیفٹیننٹ جنرل سمیع خان بھارتیہ سینا کے لیفٹیننٹ جنرل ہو کر ریٹائر ہوئے۔ Very few Muslims, large number of Muslims have all gone to Pakistan. بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ پرانے خاندان بھی بدلتے ہیں۔ So can you tell me what is the relevance of microfinance in India? Well, microfinance is a concept pioneered by the Grameen Bank in Bangladesh. It's very essential, I feel, in developing third world countries because it enables very small micro enterprises to gain finances for themselves. اودھ کی تہذیب پہلے آپ کی ہے۔ اس تہذیب میں مہمانداری کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ دلی کے ختم ہونے کے بعد جب لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب کا آغاز ہوا تو دسترخوان پر بھی کافی سجاوٹ آ گئی کہ ہر چیز کو کوٹ کے چھان کے، جس سے کہ کھانے میں لذت کافی آ جاتی تھی۔ اودھ میں لذیذ کھانوں کی پرمپرا گھروں سے نکل کر گلی کوچوں تک میں پھیل گئی ہے۔ لکھنؤ کے ٹنڈے کے کباب اور پراٹھے دور دور تک مشہور ہیں۔ I think the strongest links is Islam's great belief and actual name Islam, which means peace. Peace is the thing that I think has been the greatest link between Islam and India. India of the days of Buddha, India days of Ashoka, India about which Iqbal had written and said, چشتی نے جس سمی پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کرشن اور نانک کو گوتم کی یہ پھلواری ہے۔ یہ بھی اقبال کا ہی ہے، کرشن اور نانک کو گوتم کا یہ پھلواری ہے، وارث و چشتی کا دریا کرم جاری۔ حاجی وارث علی شاہ یہی ہیں اور چشتی کا تو آپ نے نام سنا۔
I see such crowds of Hindus and Muslims, the very, very clear picture of national integration. And that shows that India has imbibed the spirit of love and kindness. सूफियों ने रूहानियत को इंसानियत से जोड़ने की जो कामयाब कोशिशें की थीं, उसका एक शानदार नमूना ये मेले हैं। यहाँ आपसी मेलजोल ही नहीं बढ़ता, बल्कि व्यापार भी होता है। My husband, General Habibullah, was given charge of the Army, Navy and Air Force to build the whole three forces together and make the complete infrastructure for the entire future of the India's one of the most sensitive areas, the defense. लखनऊ ने जिस तहजीब को जन्म दिया था, वो सिर्फ लखनऊ तक सीमित न रही, बल्कि अवध के दूसरे कस्बों तक फैल गई। मलिहाबाद, काकोरी, खैराबाद और मुहान जैसे कस्बों में सांस्कृतिक चेतना पैदा हुई, जिसने गांवों तक की जिंदगी पर भरपूर असर डाला। इन कस्बों में संगीत और साहित्य की ऐसी शानदार रवायत बनी, जिसने बड़े बड़े शायरों को जन्म दिया। जोश मलिहाबादी, हसरत मुहानी वगैरह ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका निभाई है, वो सराहनीय है। God in his infinite wisdom has pointed out again and again to man, look, how can you deny the graciousness, the bounties that I have bestowed upon you? Look at these beautiful mountains, these beautiful streams, the wind and the rain and the flowers, the chirping of the birds, the moving of ships in the bosom of the ocean. Look, how can you deny the existence of God and love of God? I mean, when you hear this, almost like a beautiful, I wouldn't say a poem, it's an inspired word, but the rhythm and the beauty of this surat, I think anybody would be inspired. कलकत्ता, शेरशाह सूरी की राख की मंजिल, जो हिंदुस्तान के दो कोनों को मिलाती है। कलकत्ता, जहाँ के नायक सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाकर वाजिद अली शाह को जिंदा किया। कलकत्ता, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने मिली जुली संस्कृति को बहुत ही गहराई में जाकर समझा। कलकत्ते ही में काजी नजरुल इस्लाम ने बांग्ला भाषा में इश्क व आज़ादी के गीत गाए, जो आज तक लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। हुगली के किनारे चिंसुरा में हाजी मोहसिन का इमामबाड़ा इंडो डच आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। You see, Calcutta, unlike any other city in India, was based on the collapse of national power. Most of them were controlled by Muslims. For example, when Bahadur Shah Zafar collapsed in 1857, came to Calcutta, went to Burma. On February 6, 1856, Awadh was annexed. So Wajid Ali Shah came to Calcutta, 40,000 people, and settled at Matya Bharuch. So a new Lucknow was almost transplanted in Calcutta. In fact, one thing very interesting is that Sherar, who wrote his Guzishta Lucknow, he was just 12 years old when he came to Matya Bharuch. And the entire vivid account of Lucknow, this is a textbook on Lucknow, was written of what he saw of Lucknow in Calcutta. Similarly, when Tipu handed over his children to Cornwallis in 1798, then a new colony came up in Calcutta, which is Tollygunge now, and the Tolly Club, the RCGC Club, and the entire Tollygunge belonged to
Tipu Sultan family. And as many as 13 mosques in Calcutta have been built by Tipu Sultan. Another factor which is very important, that Calcutta was emerging as the biggest colonial city in India and the most urban place, and also perhaps at that time Calcutta emerged as the most cosmopolitan city in the world. That's shown with the British rule over. Yeah, this one. Yeah. It's like a wide ocean of humanity. So the urban requirements brought in urban technology, which only the Muslims were familiar with. For example, you've just seen the film, that there's not a single brick-built house in Calcutta which has not been built by the Muslim Rajmistris or architects. Similarly, in other areas like supply of milk, supply of flesh, supply of various other things, which are, in fact, the supply of all urban requirements were conducted by the Muslims. And in fact, the transport system of Calcutta was also organized by these people, early settlers of Muslims in Calcutta. So the Muslims were involved from the very genesis of the city of Calcutta. When Ghalib came to Calcutta from Delhi, he found the difference so striking that he wrote that famous poem, Kalkatte ka jo zikr kiya tune hum nashi, ek teer mere seene pe mara ke haya hai. And in one of his letters he writes that if I had two lives, one I'll definitely spend in Calcutta and the other one where, I don't know. Urdu मोहब्बत की ज़बान कहलाती है. दो तहजीबें थी, उनके मेल जोल से ये ज़बान पैदा हुई थी. तो ज़ाहिर है कि इसमें गुस्सा और खफगी तो हो ही नहीं सकती थी. मोहब्बत की वजह आप मिल रहे हैं किसी से, तो आप लड़ने के लिए थोड़ी उससे मिल रहे हैं, आप तो मोहब्बत के लिए मिल रहे हैं उससे. तो लिहाजा आपकी ज़बान में वो सारी शीरीनी. खुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवेल आग का दरिया ने ही उन्हें भारत के पहली पंक्ति के लेखकों में जगह दी. इसलिए आ गई कि आपके सारा पूरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स का उसमें शामिल था. खुसूसियत ये है, उर्दू शायरी की ये खुसूसियत ये है कि वो किताबों में महदूद नहीं थी, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल थी, आपकी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती थी और तर्जुमानी करती थी और करती है, और हर तबके की इंसानी जज्बात और रिश्तों की जैसी फनकाराना तर्जुमानी कुर्रतुल ऐन हैदर करती हैं, वो कामयाब है. हर फिरके की, यहाँ तक कि उर्दू मेरे ख्याल में वाहिद ज़बान है जिसमें कि बेगमाती ज़बान अलग थी, औरतों की ज़बान अलग थी. हमारी गज़ल जो इस वक्त सबसे मकबूल सिन्फ है, सिर्फ उर्दू में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में, लाइट म्यूज़िक में गज़ल से बेहतर सिन्फ इस वक्त कोई नहीं है. अली सरदार जाफरी इनकलाबी शायरी के अलम बरदार हैं. जो ज़बान दिल्ली थी, खड़ी बोली वाली, वो वली दखनी ने की और उन्होंने अपना दीवान औरंगाबाद में मुरतब किया और औरंगाबाद से लेके दिल्ली गए और उसका असर जब दिल्ली पर पड़ा तो मीर तकी मीर और गालिब और सौदा और ये तमाम शायर पैदा हुए. मीर तकी मीर का शेर है कि कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया. नरगिस दत्त ने पंडित नेहरू से पूछा, बीमार थे, कि पंडित जी कैसा मिजाज है? कह लगे उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है. तो ऐसे शेर किसी ज़बान के पास है नहीं, ये जो कोटेबिलिटी है इसकी. एक ज़माना था जब दिलीप कुमार को फिल्मों में आने पर अपना नाम यूसुफ खान बदलना पड़ा था. यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए थे. लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि किसी को अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है. शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के अलावा
نہ جانے ایسے کتنے ہی خان ہیں جنہوں نے یہ کبھی سوچا تک نہیں کہ انہیں فلم کے پردے پر کسی دوسرے نام کی ضرورت ہے. How do you see the Indian Muslim? Indian Muslim is a category totally different from Muslims anywhere else in the world. He is completely different from, he's different from Muslims in Arabia, from Iran, from the Maghreb, Morocco, Algeria. He is, because he has grown up in an ethos where there are other communities, where there is a majority community, and with whom he has lived in perfect harmony. Nowhere in the world has he been able to create the Taj Mahal. Nowhere was he able to create a Lal Qila, Jama Masjid, Ghalib, Josh Maliabadi, Iqbal. This makes the Indian Muslim a category completely different from Muslims anywhere else in the world. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈائریکٹر پروفیسر حبیب قدوئی سائنٹسٹ ہوتے ہوئے بھی میس کمیونیکیشن کے وشیشج. Jamia was established in 1920 during the freedom movement. In fact, as part of the freedom movement. You could say it was the educational component of the freedom struggle. And Gandhi ji and Zakir Hussain and their companions had this concept of Nayi Taaleem, which is a unique concept in the sense that their idea was to impart education by enabling students to learn by doing things with their own hands throughout the course. This thing is sort of inculcated into them that they are going to be very crucial element in the transformation that is taking place in the society around us. As media persons, they should be sensitive to what is happening by way of social change, right? And they should be able to communicate it to others. It's very true. There is a dividing line, that's the Narmada River. South of Narmada, they are educationally very aware, and it's an educational resurgence that has taken place in the south. North of Narmada, in the so-called Hindi belt, unfortunately Muslims have not progressed educationally. Hamdard has chosen very wisely the two major planks on which human resource development is based, health and education. The organization was set up in 1906 as Hamdard Dawakhana. حکیم عبد الحمید کی بنائی ہوئی یونیورسٹی جامعہ ہمدرد ایک الگ طرح کا ادارہ ہے جو ویگیانک ڈھنگ سے یونانی چکتسا پدھتی کی پڑھائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے دوسرے پروفیشنل کورسز کے لیے بھی مشہور ہے. And whatever earnings were there from the Dawakhana were plowed back into education. The result has been a university known as Hamdard University, which was established in 1989. Hamdard Education Society is an umbrella organization for doing a lot of things. It's running 3 schools in Delhi. One is the Hamdard Public School, which you had the occasion to visit this morning. Another is the Rabia Girls Public School, which is in the walled city of Delhi. Yet another is Hamdard Primary School, which is located on the campus of the Hamdard University. Apart from running these schools, there is a talent search and scholarship scheme which Hamdard Education Society is conducting. But before we conclude it, I would like to mention the work being done by the Hamdard Study Circle. Yes, absolutely. You know, the representation of Muslims in the services has not been very impressive, not very adequate either. So far we have been able to place more than 80 candidates in the highest civil services of the country, IAS and the allied services, and that has generally been recognized. کرناٹک میں عالمین والے تعلیم کے لیے کس قدر کام کر رہے ہیں. ان کے 20 اسکول ہیں, کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ کالجز ہیں, وہ تعلیم کا بہت کام کر رہے ہیں. کرناٹک میں وقف کا پیسہ
शिक्षा के प्रसार में खर्च किया जाता है। ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير On this world and hereafter, and they ask you concerning the orphans, say, to set right for them their affairs is good. And if you become co-partners with them, they are your brethren. The purpose of starting computer education centers in mosques is that we can provide in at least introduction to computers and higher level education in that field to underprivileged people in the Muslim community. Alhamdulillah, we have 3 centers in Bangalore, and inshallah the 4th one is coming up at the largest mosque in Bangalore, Jamia Masjid, and that will be entirely for women. अगर आपने एक बच्चे को तालीम दी तो वो सिर्फ आगे चल के एक फ़र्द को तालीम दी आपने, लेकिन अगर एक बच्ची को तालीम दी तो उससे पूरे ख़ानदान पर असर पड़ता है। इसलिए कि जो तालीम याफ्ता माँ होती है उसके बच्चों की तरबियत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है उस माँ की बच्चों की तरबियत से जो जाहिल है, जो पढ़ी लिखी नहीं। हसनत सोसाइटी का ये स्कूल एक ख़ास तरह का स्कूल है। इस स्कूल में 3rd डिवीज़न में पास होने वाले बच्चों को एडमिशन देकर ऐसी तालीम दी जाती है कि वो 1st डिवीज़न में पास होते हैं। हिंदुस्तान के बादशाहों में टीपू सुल्तान के नाम की एक अलग ही अहमियत है। टीपू सुल्तान की नज़र एक तरफ अपने मुल्क और उसके मसाइल की तरफ थी, तो दूसरी तरफ दुनिया में होने वाले परिवर्तन भी उनकी निगाह में थे। खून में लिथड़ा हुआ जीन पोश टीपू के आखिरी समय का नज़ारा खींच देता है। ये वो मकाम है जहाँ दिल भर आता है। यहाँ आकर अल्लामा इकबाल इतने भावुक हुए कि दिन भर आप दीदा रहे। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ये वो कथा है जिसमें मशहूर शायर अख्तर शिरानी ने टीपू सुल्तान के देश प्रेम की तर्जुमानी की थी। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक दिल। 16वीं सदी में दक्कन के सुल्तान कुली कुतुब शाह हैदराबाद जैसे शहर के बानी ही नहीं बल्कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर भी थे। उन्होंने गज़ल में पहली बार औरत के जज्बात को सामने रखा था। मुखफ़्फ़म जाह इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग के हर शोबे की तालीम दी जाती है। रमज़ान मुबारक में चार मीनार के आसपास रौनक बढ़ जाती है। निज़ाम ने हैदराबाद में तहज़ीब और तालीम के मैदान में बुनियादी काम किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एक बड़ी ख़ास यूनिवर्सिटी है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज भी निज़ाम का ही कारनामा है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के साथ ही मलिक बिन दीनार अपने 12 मुरीदों को लेकर यहाँ आए थे। उनका पैगाम था दोस्ती और मोहब्बत।
اسی پیغام کی نشانی ہے کیرل کی یہ مسجد. اس کے پیغام کی مہک آج بھی چاروں طرف پھیل رہی ہے. انیس 1964 میں مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس زمانے میں مسلمانوں میں پڑھے لکھے صرف 30% تھے، لیکن آج 55% ہو گئے ہیں. مسلم ایجوکیشن سوسائٹی یعنی MES کے سنستھاپک اور چیئرمین ڈاکٹر MA عبداللہ ہیں. یہ سنستھا تقریباً 150 انسٹیٹیوشنز کا نظام سنبھالتی ہے. یہ سنستھائیں ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں کی سہایتا سے چل رہی ہیں. یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں کبھی سر سید احمد خان رہا کرتے تھے. سر سید نے اس ملک کو تعلیم کا ایک عظیم تحفہ دیا تھا. 100 سال سے پہلے ایک اسکول کے طور پر شروع کیا گیا ادارہ آج سب کانٹیننٹ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. دیش کے ہر شعبے پر اپنی چھاپ چھوڑنے والی اس سنستھا کے چھاتر جیون کے ہر میدان میں اپنی خاص پہچان بنا چکے ہیں. اس یونیورسٹی نے کلا، ساہتیہ، سنیما، کھیل کود، راجنیتی، وگیان، ٹیکنالوجی کے کھیتر میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن پر دیش گرو کرتا ہے. یہاں تک کہ اس ادارے نے بھارت اور پاکستان کو راشٹرپتی بھی دیے. میں حیرت میں پڑ گیا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سر سید کی شخصیت کتنی عظیم تھی. اس مہان دیش میں ایک مہان دھارمک پرمپرا محبت اور دوستی کے رشتوں کو مضبوط بنا رہی ہے، آپسی میل جول بڑھا رہی ہے. انسانوں کو قریب لانے کے لیے، کلا اور سنسکرتی سے جیون کو سجانے کے لیے، اپنے ہنر اور دستکاری سے خوشی کے نئے راستے تلاش کرنے کے لیے اس دیش میں اسلام مانوتا کی خدمت کر رہا ہے.